Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Am I audible? السلام علیکم. یس میم. Okay. Inshallah, today we will begin the 24th session of Golden Stories of Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, and we are on page number 199. Displays of trustworthiness by Muslims. When Muslims entered Al Madain and started gathering the spoils, a man came to the treasurers. He gave them a small but precious cup. The officer in charge and his lieutenant said, "We have never seen such a thing. It is more precious than all we have gathered by far. Did you take anything from it?" The man replied, "By Allah, had it not been for him, I would not have returned it to you." The treasurers realized that this was someone important. They asked, "Who are you?" The man said, "By Allah, I will not tell you or others who I am, lest you praise me. I praise Allah and am content with his servant." They followed the man secretly until he reached his friends and found that it was none other than Amr bin Abd Qais, the famous scholar and ascetic. Now, what do we अंडरस्टैंड बाय दिस कि उस ज़माने में किस तरीके की किस लेवल की अमानतदारी होती थी. यानी मुस्लिम्स जो थे वो इतने अमानतदार थे कि कोई देखे ना देखे उनके इख्तियार में होता था, लेकिन फिर भी वो किसी भी तरीके का किसी भी एक नुक्ते बराबर भी चीटिंग या अमानत में खयानत नहीं करते थे. These are the basic virtues, basic traits which a Muslim should possess. And unfortunately, we are running in the time जहाँ पर हम देखते हैं कि जहाँ ईमानदारी, अमानतदारी, सच्चाई की बातें हों तो मुस्लिम कौम जो है वो निहायत ही बदनाम है. और उसकी वजह क्या है? यही है कि एक तो दीन से दूरी, दूसरा ये कि वो दुनिया में इतने ज़्यादा मुब्तला हो गए हैं कि दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए अपना मॉरल और कैरेक्टर, अपने वैल्यूज़ को भी बचा के रखना उनके लिए ज़रूरी नहीं हो गया. एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग. और एक मुसलमान अगर कोई गलती कर जाता है तो पूरे इस्लाम के ऊपर उंगली उठती है. और ये जो एक बायस्ड एटीट्यूड है पूरी दुनिया में और वो इसी तरीके से चल रहा है. अब हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? वी हैव टू प्रूव आवर सेल्फ इन कैरेक्टर कि जहाँ कहीं भी मुसलमान जाए, जहाँ कहीं भी आपके मामलात हो, जहीं किसी भी जगह पे जहाँ पर आपको इस्लाम को रिप्रेजेंट करना हो, मुसलमान को रिप्रेजेंट करना हो, देन गिव योर बेस्ट शॉट. इतना क्वालिटी, इतनी अच्छी प्रोफेशनलिज्म दिखाएं, इतना हाईएस्ट लेवल ऑफ कैरेक्टर डिस्प्ले करें कि आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि इस्लाम को भी जो है ना, आप ये मामलात से यू कैन डू दावा टू अदर्स. आप जो है नॉन मुस्लिम्स के साथ हदीसें और कुरान की रेफरेंसेस देंगे, वो उनको बाउंसर जाएगा. आपके जो मामलात होंगे, जैसा आप अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, आपका जो कैरेक्टर और जो वैल्यूज होगा उसके मुताबिक फिर वो दीन की तरफ माइल होंगे. इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी मामला था कि उनके इखलाक, उनका खुलूस, उनकी बातें, उनकी सोच, उनके डिसीजंस, उनके जजमेंट्स, वो देखकर लोग जो हैं दीन इस्लाम की तरफ माइल हुआ करते थे. तो हमें भी वही चीज़ों को याद रखते हुए अपने आप को उस सांचे में ढालना है कि आप जब कभी भी जो भी चीज़ आप प्रेजेंट करें, जो भी आपका मामलात हो, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी हो और आपके अंदर वो बेसिक वैल्यूज़ ऑफ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, उसके बाद अमानतदारी, ट्रस्टवर्दीनेस, रिलायंस, ये सब आप में नज़र आनी चाहिए. और जो कोई भी आपके साथ डील कर रहे हों, चाहे वो आपके घर वाले हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके बिजनेस प्रोफेशनल्स हों, आपके क्लासमेट्स हों, स्ट्रेंजर्स हों, गेस्ट्स हों, विजिटर्स हों, वो हर हर लेवल पे और हर रिलेशन पे झलकना चाहिए. ये मुस्लिम्स जब अल मदाइन में एंटर हुए तो उन्होंने माल गनीमत जो है वो कलेक्ट करना स्टार्ट किया. तो एक आदमी जो है वो ट्रेजरर के पास आए और उन्होंने उनको एक प्रेशियस कप दिया. द ऑफिसर इंचार्ज ने कहा और उनके लेफ्टिनेंट ने भी कहा, "वी हैव नेवर सीन सच अ थिंग. इट इज़ मोर प्रेशियस देन वी हैव गैदर्ड सो फार." यानी एक नायाब किस्म की चीज़ थी वो. एंड आपको पता है नायाब सी, एंटीक सी, प्रेशियस चीज़ की वैल्यू ज़्यादा होती है. "डिड यू टेक एनीथिंग फ्रॉम इट?" द मैन रिप्लाइड. अब वो उससे पूछ रहा है, वो ट्रेजरर से, कि आप लोगों ने इसमें से कुछ लिया है? तो कहते हैं वो, बाय अल्लाह, दे आर स्वेरिंग ऑन अल्लाह, कि बाय अल्लाह वल्लाही हमने अब तक के अगर इस बंदे, ये बंदा ना होता, उन्होंने पॉइंट किया एक बंदे की तरफ, हैड इट नॉट बीन फॉर हिम आई वुड नॉट हैव रिटर्न इट टू यू. यानी वो लोग जो हैं अपना जो उनके आगे जो सीनियर है उसके तरफ पॉइंट करके बता रहे हैं कि ये अगर बंदा नहीं होता तो आपको हम ये रिटर्न नहीं कर रहे होते. द ट्रेजरर रियलाइज दैट दिस वाज समवन इंपॉर्टेंट. अब उन्हें पता चला कि ये कोई
इम्पोर्टेंट आदमी है। फिर उन्होंने उनसे पूछा आप कौन हो, हु आर यू? तो मैं उस आदमी ने जवाब दिया वल्लाही आई विल नॉट टेल यू और अदर्स हु आई एम। उन्होंने कहा कि मैं आपको, अगेन उन्होंने स्वेर किया अल्लाह पे और कहा कि मैं आपको और दूसरों को नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपको मेरी शनाख्त हो जाएगी तो आप मुझे प्रेस करोगे, और मैं जो है मैं सिर्फ अल्लाह की हम्दो सना करता हूँ और मैं कंटेंट हूँ, मुतमईन हूँ जो भी अल्लाह ताला मुझे अजर दे, रिवॉर्ड दे। अब ये लोग आदमी जो हैं वो सीक्रेटली फॉलो करने लगे। फिर वो उनके दोस्तों के साथ जाके, वो जो शख्स था जिनको फॉलो करते वो अपने दोस्तों के साथ जाके मिल गया। और फिर उन्हें पता चला कि ये कौन थे जो जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा था। वो थे आमिर बिन अब्द कैस, जो कि बहुत बड़े फेमस स्कॉलर थे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोई इंडिविजुअलिटी होती नहीं है, ना हम किसी सीनियर पोजीशन पे होते हैं, ना हम इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, ना हम इतने स्कॉलर या नॉलेजेबल होते हैं, लेकिन फिर भी वी क्रेव फॉर प्रेजेस, हम प्रेजेस के लिए क्रेव करते हैं, हम एक्नॉलेजमेंट के लिए क्रेव करते हैं। और कई बार अमानतदारी में हम खयानत कर देते हैं, जहाँ हमें ट्रस्ट वर्दीनेस डिस्प्ले करना चाहिए वहां पर हम थोड़ा सा कैजुअली, अननोइंगली, अनइंटेंशनली फ्रॉड कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ों से हम लोगों को केयरफुल रहना पड़ेगा, हमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। उसी तरीके से जैसे हमने कल, यस्टरडे वी हैड अ डिस्कशन, वो राशन वाले फूड के लेकर और चंद चीज़ों को लेकर जो हमारा बिहेवियर है, केयरलेस बिहेवियर है, अनइंटेंशनल जो हम ज्यादती कर जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों से हम लोगों को इज्तनाब करना पड़ेगा, हमें बचना पड़ेगा। अब ये कॉन्शियसनेस जब हमें आएगी ना कि वी आर अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग, we are accountable what is halal, what is haram, we are accountable what grain we are putting in our mouth। तो ये सब चीज़ों को जब हम ध्यान से गौर व फिक्र करते हुए चलेंगे, अल्लाह के डर से इसको समझते हुए चलेंगे, रूलिंग्स क्या है उसको मद्देनजर रखते हुए चलेंगे, तभी इंशाल्लाह ताला हम लोगों के जो मामलात है वो बिइज़्निल्लाह सुधरेंगे। Is Uwais bin Amir among you? When reinforcements from Yemen would come to him, Umar bin al-Khattab radiallahu anhu would ask groups of the arriving Yemeni soldier, is Uwais bin Amir among you? Finally, when someone pointed a man among them, Umar radiallahu anhu went up to him and asked, are you Uwais bin Amir? The man replied, yes. Are you from Murad and then from Quran? Asked Umar radiallahu anhu. Yes, Uwais replied. Were you sick with leprosy and were you then cured except for a spot on your body that is the size of a dirham, which is a coin? Asked Umar radiallahu anhu. Yes, Uwais replied for a third time. And do you have a mother? Umar radiallahu anhu asked. Yes, replied Uwais. ये बहुत ब्यूटीफुल किस्सा है, गौर से सुने। एक बार जब भी आपको पता है मिलिट्री एक्सपीडिशंस होते हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग ठिकानों से जो है वो रीइंफोर्समेंट्स आती थी, मिलिट्री एक्सपीडिशंस होते थे और वो आर्मी यहाँ से वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रही होती, कहीं पर वो कोलेशन में फाइट करते थे, कहीं वो सेपरेटली जाते थे। तो मूवमेंट अक्सर होती थी, मिलिट्री मूवमेंट अक्सर होती थी। तो जब यमन से सोल्जर्स आते थे तो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जो है वो इंक्वायरी करते हैं कि इनके बीच में, यमनी सोल्जर्स के बीच में उवैस बिन आमिर है कि नहीं। तो एक बार इसी तरीके से एक और एक रीइंफोर्समेंट्स आई थी यमन से, तो उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने इंक्वायरी की कि क्या आप में उवैस बिन आमिर कोई है। तो एक दफ़ा जब एक ग्रुप आया तो डेफिनेटली उसमें उवैस बिन अमर मौजूद थे। तो लोगों ने, जो दूसरे सोल्जर्स थे, उन्होंने एक शख्स की तरफ पॉइंट किया। अब उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु उनके तरफ बढ़े और उनसे पूछा कि आप उवैस बिन आमिर हैं? उन्होंने कहा हाँ। फिर उन्होंने पूछा क्या आप मुराद और करान से हैं? तो उन्होंने कहा हाँ, जगहों का नाम है ये, कुंबे और जगहों का नाम है। उसके बाद फिर उनसे पूछा कि आपको लेप्रेसी कोढ़ हुआ था और आप फिर उससे अल्लाह ने आपको शिफा दी? कहते हैं हाँ। फिर उनसे पूछा कि अभी आपकी बॉडी में सिर्फ वो जो लेप्रेसी है उसका सिर्फ एक कॉइन जितना स्टेन या दाग रह गया है? उन्होंने कहा हाँ, स्पॉट वो कॉइन जितना उनकी बॉडी पे रह गया है। फिर उनसे थर्ड टाइम पूछा कि क्या आपकी वालिदा हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। आगे बढ़ते हैं। उमर रदियल्लाहु अन्हु then said, I heard the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam say, among a group of reinforcements from Yemen, Uwais bin Amir will come to you. He is from Murad and then from Qaran. He was sick with leprosy and then he became cured of the disease except for a spot on his body that is the size of a dirham. He has a mother and he is dutiful to her. Were he to swear by Allah for something to occur, Allah would answer him. That is, Allah subhanahu wa ta'ala would fulfill his oath. If you are able to have him ask forgiveness from Allah for you, then do so. Umar radiallahu anhu then said to Uwais, so ask forgiveness from Allah for me. Uwais then invoked Allah to forgive Umar radiallahu anhu. Where do you want to go? Umar radiallahu anhu asked. To Kufa, replied Uwais. Should I not write a Kufa's governor for you by informing him of your arrival so that he can honor you and take proper care of you?
Umar radiallahu anhu asked, for me to travel among common people, people who are weak, poor, and who do not receive attention from others, would be more beloved to me, said Uwais politely, rejecting Umar's offer. अब उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना था कि जब ये रीइंफोर्समेंट यमन से आएगी तो उसके बीच में एक शख्स होगा जिसका नाम होगा उवैस बिन आमिर। वो आपके पास आएंगे जो मुराद से और फिर करान से होंगे और वो बीमार होंगे और लेप्रोसी उन्हें होगी और फिर वो ठीक हो जाएंगे और उनकी बॉडी के ऊपर एक ही साइज कॉइन की दिरहम की साइज का मार्क स्पॉट होगा। उनकी वालदा होगी और वो उनके साथ बहुत खिदमत गुजार बेटे हैं। फिर उन्होंने पूरा ऐड किया, अगेन ही स्वेरिंग बाय अल्लाह फॉर समथिंग टू अकर, यानी अगर उवैस बिन आमिर अल्लाह से कुछ दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसको पूरी कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा कि अपनी मगफिरत की दुआ करवाएं इनसे। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यही किया कि उवैस बिन आमिर को कहा कि आप मेरे लिए दुआ करें, मेरी मगफिरत की दुआ करें अल्लाह से। और फिर उवैस ने उनके लिए दुआ की। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ कूफा में। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं कूफा के गवर्नर को लेटर लिख देता हूँ कि वो आपके अराइवल के लिए इंतजामात करे और आपको ऑनर करे और आपका ख्याल रखें। तो इस पर उवैस बिन आमिर क्या कहते हैं? कहते हैं मेरे लिए ये कॉमन लोग जो हैं, वीक और पुअर हैं, जिनको कोई अटेंशन नहीं पे करता, ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बिलवड है मेरे लिए। और उन्होंने पोलाइटली उमर रदियल्लाहु अन्हु का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। The following year, a high-ranking Yemeni man from the previous year's group of reinforcements met Umar radiallahu anhu. When Umar radiallahu anhu asked about Uwais, the man replied, when I left him, he was in a disheveled state, with little to his name in terms of material possessions. Umar radiallahu anhu then said to the man, वो पूरा किस्सा उन्होंने फिर रिपीट किया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया था। The man then went back to Uwais and said, invoke Allah to forgive me. Uwais said, compared to me, you are the one who has more recently completed a journey whose purpose was noble. That is, therefore, your supplication is more likely to be answered. So you invoke Allah to forgive me. The man paid no heed to what Uwais said, but instead simply repeated his request. Ask forgiveness from me. Uwais asked, did you meet Umar radiallahu anhu? The man replied, yes. Uwais then invoked Allah subhanahu wa ta'ala to forgive the man. Only a short while passed before people came to know about Uwais and about his story. And when they find out about him, he simply left, probably hoping to go to a place where he would not be known, where he could live a simple, obscure life among simple, poor people. फिर ऐसा हुआ कि जब ये निकल गए और उसके बाद दोबारा से यमन के रीइंफोर्समेंट आई और उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने बताया उनको ओवैस बिन आमिर के बारे में। अब ऐसे होता था कि क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो एक जिसे हम कहते हैं ना एक राज या एक सीक्रेट बता दिया था कि ये बंदा जो है ये ब्लेसेड आदमी है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इस बंदे की दुआ को खारिज नहीं करते, तो सारे जो है अपनी मगफिरत की दुआ करवा रहे हैं। तो ये उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आगे दूसरे रैंकिंग ऑफिसर को बताया और फिर उन्होंने जाकर उवैस बिन आमिर से अपनी मगफिरत के लिए दुआ करवाने के लिए रिक्वेस्ट की। तो उवैस बिन आमिर कहते हैं उनको कि आप उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु से मिलकर आ रहे हो? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि उन्होंने उनको टिप दी। तो उन्होंने पहले तो उन्होंने उनको पोलाइटली रिजेक्ट किया, ये कहकर कि आप जर्नी कर कर आ रहे हो, आपका ज़्यादा चांसेस है कि आपकी दुआ कबूल हो, आप एक नोबल जर्नी से आ रहे हो, तो आपकी दुआ ज़्यादा कबूल होगी, आप मेरे लिए दुआ करें। लेकिन जब उन्होंने फिर से इंसिस्ट किया तो उवैस ने उनके लिए दुआ की और उनको फिर जब ये हादसा होने लगा कि लोग जो हैं आम हो गया ये बात कि भई वो दुआ करते हैं और कबूल होती है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़े कर दिया है और उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों के अंदर स्प्रेड कर दिया। तो फिर उवैस ने क्या किया, थोड़े टाइम के बाद वो एक अलग जगह पे चले गए और अपनी ज़िंदगी खामोशी में कहते हैं ना गुमशुदा होकर उन्होंने अपनी सिंपल लाइफ लीड की अमंग पुअर पीपल। आप लोगों को इनका किस्सा वैसे पता है कि उवैस बिन आमिर को क्यों इस तरीके की सुभान अल्लाह इतने बेहतरीन दर्जात कैसे मिला? आप लोगों में से किसी को इनकी स्टोरी के बारे में पता है?
Anybody? इन्हें उवैस करनी भी कहते हैं, if you can relate something, अगर किसी को याद आ रहा हो तो. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाहि वबरकातहू. जी, उन्होंने अपने माँ की बहुत खिदमत की थी Right? और इसीलिए उनकी माँ ने उनको बहुत दुआ दी थी, सो ही वाज ब्लेस्ड लाइक दैट। और किसी को पेरेंट्स की कुछ, बहुत खिदमत। बिल्कुल सही. और किसी को कुछ इनके बारे में पता है? Anybody could add this story. इनका ऐसा, मैं शॉर्ट में अगर आप लोगों को बताऊं ना, आपको पता है उन दिनों कम्युनिकेशन यूज्ड टू बी सो टफ. यानी आपको अगर कम्यूट करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना है, तो इधर कैमल और हॉर्स और डोंकी की तरफ से उस पे सवार होके आपको जाना पड़ेगा, और महीनों लगते थे ट्रैवल करने के लिए. एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए लोग दूर दूर से आते थे, सीखने के लिए, बैत करने के लिए, उनके साथ टाइम बिताने के लिए. ठीक है, उसी तरीके से अवैस करनी रदी अल्लाह अन्हु, लेट्स कंप्लीट एंड गिव द ऑनर. तो उवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु भी जो थे ना, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने के लिए चल पड़े थे. अब वो इतनी मेहनत और मशक्क़त करते हुए पहुंचे, ही वॉज ऑलमोस्ट देयर. तभी उनको मैसेज अपनी मदर का आया. शी वॉज ब्लाइंड, ओके, कि शी हैज़ टू कम बैक, आई मीन ही हैज़ टू कम बैक विदाउट मीटिंग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो वो अपनी माँ को ऑनर करने के लिए दोबारा से पलट गए. वो बहुत खिदमत गुजार, बहुत नेक, फर्माबरदार, ड्यूटीफुल सन थे. तो वो बिना मिले पहुंच गए वापस से अपनी मदर के पास. तो ये जो उनकी एक डीड था ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद आया, और इसीलिए फिर वो जो है उनकी दुआ जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑनर करने लगे, और वो करीब हो गए. एंड हत्ता कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिले थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज, ही एक्नॉलेज्ड कि ही इज़ द पर्सन. उनको अल्लाह ताला ने वाज़े करवाया, कितनी अच्छी तरह से उनकी शनाख्त करवाई. एंड उनसे दुआ करने के लिए कहा गया उमर इब्न खत्ताब के. लाइक इमेजिन द स्टेटस ऑफ उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, द खलीफा ऑफ हिज टाइम, वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड्स ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और उनको कहा गया कि आप उवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु से अपनी मगफिरत की दुआ करें. मतलब इधर एक जो बहुत बड़ा नुक्ता, जो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, कौन सी ऐसी चीज है जिसने उवैस करनी रदियल्लाहु अन्हु को वो स्टेटस दी? उन्होंने अपनी माँ की खिदमत की, उन्होंने अपनी माँ को तरजीह दी, उन्होंने अपनी माँ की फरमाबरदारी की. यानी दिस इज द शॉर्टकट आई एम टेलिंग यू टू प्लीज अल्लाह अज़्ज़ा वजल. और हम लोगों ने कुरान में भी देखा है कि कितनी जगह पर सेम लाइन में आता है जहां पर अल्लाह ताला अपनी अकीदा तौहीद की बात कर रहे हैं. द कंप्लीटिंग स्टेटमेंट इज एहसान बिल वालिदैया. यानी इस, हमारे लिए ये प्रूफ है, ये हमारे लिए एक टिप है कि हम लोगों के लिए शॉर्टकट जो है वो क्या है? वो है अपने माँ बाप के पैरों के तले बैठे रहना, उनकी खिदमत करना, उनको प्रोवाइड करना, उनकी जिस किस्म की आजमाइश हो, ठीक है, उसके अंदर आप कोशिश करें कि आप अपना प्यारा हिस्सा डालें. आपको जो है वो अपना सर, अपने विंग्स उठाने नहीं है, उफ तक नहीं करना है. और ये रिमाइंडर है मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, कि ये जो है ना, ये एक बहुत अच्छा शॉर्टकट है हमारे लिए टू जन्ना, कि हम अपने पेरेंट्स की खिदमत करें, हम अपने पेरेंट्स की फर्माबरदार बने रहें उस हद तक जहां पर वो अल्लाह के किसी अहकामात को टकराता नहीं है. लेकिन डेफिनेटली अगर कोई रिवर्ट सिस्टर है और उनके नॉन मुस्लिम पेरेंट्स है, तभी भी आपको उनकी खिदमत करनी है. चाहे आप किसी भी पोजीशन पे, आप सीईओ, आप चेयरमैन हो, आप सेलिब्रिटी हो, आप जो भी हो, आपका दर्जा माँ बाप के ऊपर हो ही नहीं सकता. आप अपनी जन्नत उनके पैरों में ही तलाशेंगे, अपनी माँ के पैरों के तले है आपकी जन्नत. तो ये सब हिकमत है, ये सब विजडम है, इसको पहचानिए और इसकी कदर करिए. शैतान पूरी कोशिश करेगा कि आपको इस इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन से दूर रखे, आपको ये बेहतरीन नेकी से दूर रखें. वो आपके अंदर नेगेटिविटी भरेगा, वो आपकी मदर के लिए बहुत सारे आपके दिलों में नेगेटिविटी भर भर के आपको उससे दूर करेगा. लेकिन ये आपका काम है कि आप अपने दिल में पॉजिटिविटी रखें अपनी मदर के लिए, उनकी खिदमत करें, उनका एहतराम करें, उनको प्रोवाइड करें. ये बहुत चैलेंजिंग है, इट विल नॉट बी ईजी, आई एम टेलिंग यू. लेकिन मेक इट हैपन. अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे, आपके टेम्परामेंट को कंट्रोल करें, आपकी ज़ुबान को कंट्रोल करें, आपके मूड्स को कंट्रोल करें, और आपसे ये नेकी अल्लाह ताला करवा ले. क्योंकि जब आप, यानी आई हैव लिटरली सीन पीपल
جو جنہوں نے اپنے مدر اپنے والدین کی بے حرمتی کی ہے اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیر آر حدیث which signifies ان کے لیے دنیا میں کس ٹائپ کی پنشمنٹ ہے, ان کے لیے قبر میں کس ٹائپ کی پنشمنٹ ہے, ان کے لیے آخرہ میں کس ٹائپ کا عذاب ہے. تو may Allah forgive all of us یا رب, اور ہم لوگوں کو ایک بہت بیوٹیفل اور اچھا اوبیڈینٹ چائلڈ بننے والی اسٹیٹس دے یا رب, اور ہمارے بچے بھی جو ہیں نا وہ بھی ہمارے خدمت گزار اور بہترین نمونہ بنے. تو یہ دعا آپ ہمیشہ کرتے رہیں کہ آپ ایز این اولاد بہترین ثابت ہو اور آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. تو ہم اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اٹ از ویری امپورٹنٹ, اور اس کے پیچھے ہمیشہ ہم نے محنت کرتے رہنا ہے. یاد رکھیں آپ مسئول ہیں, آپ جو ہیں وہ مینٹر ہے, گارڈین ہے. آپ کی ڈیوٹی صرف بچہ جب تک دودھ پی رہا ہے اتنے تک نہیں ہے, آپ کو ہر وقت ہر مرحلے پہ آپ کو گائیڈ کرنا ہے. آپ کو ان کو کوشش کرنی ہے اینڈ تک ایز اے مدر کہ آپ کے بچے آپ کے اولاد جو ہیں ان کے لیے جنت ہو, آسان ہو, اور ہم صحیح دین اسلام پر رہیں, صراط المستقیم پر رہیں. اور یہ محنت و مشقت سو کے یا ٹی وی سیریلز دیکھ کے یا فون پہ گاسپ کر کے یا شاپنگ مالز اور سلونز میں جا کے نہیں ہوگی. آپ کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, اپنی سستی اپنا آرام کمپرومائز کرنا پڑے گا, لیکن کریے بیکاز اٹ از ورتھ اٹ. ایک بار جب آپ یعنی اس بارے میں سوچ لیجئے کہ انشاءاللہ باذن اللہ یا رب اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم جنت کی نعمتوں میں ہو اور ہمارے ڈفرینٹ درجات ہوں گے, ہم واسطہ لگا کے درجات بلند کر سکتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبروں کے اندر روشنی پرووائڈ کریں گے, ہمارے درجات ادھر بلند ہوں گے اگر ہمارے نیک اولاد ہمارے لیے استغفار کرے گی, نیک عمل کرے گی. تو یہ سودا جو ہے نا یہ بہت فائدے مند ہے. تو اس کے پیچھے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں, دوسری سب چیزیں چلتی رہیں گی, رزق لکھا ہے وہ آئے گا انشاءاللہ. دنیاوی پڑھائی بھی چلتی ہے, کریں محنت اس کے پیچھے, لیکن جتنی محنت ہم دنیا حاصل کرنے کے پیچھے کرتے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل آخرہ کی تیاری کے لیے کریں. اور جب آپ اس چیز کے پیچھے سینسیٹیو ہوں گے نا تو یہ پاسبل ہے. مرد حضرات باہر رہتے ہیں, عورتیں ہیں جن کا دین چلتا ہے گھر پہ, تو اسی لیے اس کے پیچھے لگ جائیں. اور اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جاب کر کے پیسے لے کر آ جائیں گے اور بچوں کو اچھی کالجز اور یونیورسٹیز میں ڈال دیں گے اور وہ نمازوں سے اور قرآن سے دور ہو گئے, it is not worth it. Let me tell you openly on your face, it is not worth it. اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑیں, قرآن سے جوڑیں, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے سب کچھ پا لیا. آپ کی دنیا بھی آپ پالو گے باذن اللہ, اور آخرہ میں بھی باذن اللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے. تو یہ چیز کو سب سے امپورٹنٹ ترجیح دیجیے, باقی سب فیکٹرز کو اس کے نیچے رکھیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کمپلیٹلی رول آؤٹ نہیں کر رہی, لیکن پرائرٹائز واٹ از پرائرٹی نمبر 1 that you have to take care of. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ will handle the matters. Umar's prohibition of letting captives of war stay in Medina. No, wait, there was one more thing for that. Okay. All right. Umar's prohibition of letting captives of war stay in Medina. Umar radiallahu anhu did not allow captives of war from conquered lands to enter the capital Medina. Hence, the Zoroastrians of Iraq and Persia and Christians of the Levant and Egypt were forbidden from staying in Medina, except if they became Muslims and entered Islam. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا قانون بنایا تھا کہ جو کیپٹیوز ہوتے تھے نا, بندی ہوتے تھے وار کے, پرزنرز آف دا وارز بیسیکلی کانکرڈ لینڈز میں سے, ان کو مدینہ میں انٹر نہیں ہونے دیا جاتا تھا جب تک کہ وہ دین اسلام میں شامل نہیں ہو جاتے تھے. جب تک وہ مسلم نہیں ہو جاتے, دین اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے, تو ان کو انٹری نہیں دیتے تھے. اسی لیے عراق کے جو زوراسٹرینز تھے اور پرشیا اور کرسچنز تھے ایجپٹ کے, ان کو مدینہ میں انٹری الاؤ نہیں تھی حتیٰ جب تک کہ وہ مسلمان نہ بن جائے. The policy shows his wisdom and foresight, since these were a defeated and vanquished people who were revengeful of Islam and hated it. اب آپ دیکھیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہارے ہوئے کنٹری والے ہیں, یعنی ان کو ہرا کر بندی بنا کے لے کر آ رہے ہیں. تو ان کے دل میں جو ہے نا بدلے کی آگ ہوتی ہے, بہت زیادہ ریونجفل ہوتے ہیں وہ اسلام کے لیے, اور نفرت کرتے ہیں وہ. They were prepared to conspire and plot against Islam and Muslims. تو وہ ان کے اندر ایک ہے, دل میں فیلنگ ہے کہ انہوں نے ایک پلاٹ بنانا ہے, ایک مکر کرنا ہے کچھ اگینسٹ اسلام اور مسلمس کے, انہوں نے کچھ بدلہ لینا ہے. Hence Umar رضی اللہ عنہ forbade them from residing in the capital to safeguard Muslims from their evil. اب ان کے شر سے بچا, مسلمان جو تھے مدینہ کے, ان کو یہ جو لوگ ہیں بندی, ان کے شر سے بچانے کے لیے ان کو حدود سے باہر رکھا گیا ہوا تھا. However, some companions of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had taken some of these non-Muslim captives as personal slaves. اور اسی لیے پھر کچھ صحابہ جو تھے نا, انہوں نے یہ کیپٹیوز کو اپنے پرسنل خادم کے طور پہ رکھا تھا. One of them used to plead with Umar radiallahu anhu to let him keep some of these slaves in Medina to help him in his work. So Umar radiallahu anhu let some of them stay in Medina despite being against the idea
and it led to what he expected. अभी कुछ सहाबा जो थे या कुछ जो उनके ऑफिशियल्स थे सीनेट में से, उन्होंने रिक्वेस्ट किया उमर रदियल्लाहु अन्हु को कि हमें भी ये जो स्लेव्स के तौर पे उनको रखने दे मदीना के अंदर। अब उमर रदियल्लाहु अन्हु राजी नहीं थे, इस आइडिया को वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने चंद को अलाउ किया। अब जो चंद को उन्होंने अलाउ किया था ना, उन्होंने क्या डैमेज किया वो हमारे आगे वाजे होगा। यानी व्हाट ही एक्सपेक्टेड या जो उनकी हिकमत थी ना वो परफेक्ट थी इस मामले में, एंड दैट वाज द बेस्ट। ओके, ruling against the slave's owner. Musa bin Anas bin Malik related that Sirin, who was the father of Muhammad bin Sirin, was a slave, and that his master was Anas radiallahu anhu. Like many slaves, Sirin asked his master to make a muqatab deal with him. A muqatabah deal was one in which a slave owner agreed to allow a slave to purchase his freedom. This deal customarily involved a payment plan, and when the slave finished making his final payment, he would automatically become a free man. मूसा बिन अनस बिन मालिक कहते हैं दैट सिरीन जो के फादर थे, किसके फादर थे? मोहम्मद बिन सिरीन के, जो के एक स्लेव थे, और उनके मास्टर वाज अनस रदियल्लाहु अन्हु। तो जैसे कि नॉर्मली इनके जो स्लेव्स हुआ करते थे, उन्होंने अपने मास्टर्स के साथ एक डील करने के लिए कहा, और वो डील को क्या कहते हैं? मुकातबाह। मुकातबाह का मानी ये होता है कि स्लेव ओनर जो है ना वो अग्री करते हैं कि स्लेव जो है वो कुछ अमाउंट देंगे अपने मास्टर को और अपनी फ्रीडम, अपनी आज़ादी खरीदेंगे उनसे। द डील जो है उसमें एक पेमेंट प्लान होता है, तो जैसी स्लेव अपनी फाइनल पेमेंट कर लेता है तो ऑटोमेटिकली वो फ्री मैन बन जाता है। Anas radiallahu anhu, however, was wealthy, and so he was not interested in gaining any money from Sirin. He therefore rejected Sirin's offer and thus more or less said that he preferred keeping Sirin as a slave. Sirin went to Umar radiallahu anhu and told him what had happened. Umar radiallahu anhu then went to Anas radiallahu anhu and said, make a mukatabah deal with him. When Anas radiallahu anhu then refused, Umar radiallahu anhu struck him with a stick and then proceeded to recite the following verse of the noble Quran. अब सिरीन जो है उन्होंने उनको ऑफर दिया अनस रदियल्लाहु अन्हु को कि ऐसी एक मुकातबा बनाए, बट उन्होंने, अनस रदियल्लाहु अन्हु वाज वेल्दी, तो पैसों में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि आप जो है ऐसे ही चलें, मेरे स्लेव बन के ही रहें, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उनकी प्रपोजल। तो सिरीन जो है वो उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास गए और उन्होंने पूरा माजरा बताया। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु अनस रदियल्लाहु अन्हु के पास गए और फिर उनको कहा कि मुकातबा डील आप कर दो, और अनस रदियल्लाहु अन्हु ने रिफ्यूज़ किया। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको स्टिक से मारा और फिर कुरान की ये वर्स उन्होंने रिसाइट की, वर्स नंबर 24, सूरह नंबर 24 वर्स 33, गिव देम सच राइटिंग इफ यू नो दैट दे आर गुड एंड ट्रस्टवर्दी। Anas radiallahu anhu submitted to this Quranic command, agreeing then to allow Sirin to pay his way towards emancipation. This story clearly exemplifies the beauty of Islam, for in it we read about a slave who wished to gain his freedom, while his owner refused to grant him that wish. Then, when the matter was brought before the leader of the entire Muslim nation, he sided with the slave and ruled against the slave's owner. Where else, other than in Islam, can we find a similar example in the annals of the history? Subhanallah. Few points to ponder here. एक ये कि अनस रदियल्लाहु अन्हु जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक ही वांटेड दैट स्लेव, ही वांटेड सीरीन टू बी हिज स्लेव। अब सीरीन को जो है उसको अपनी आज़ादी प्यारी थी, तो उसने क्या किया, प्रपोजल पहले दिया, उन्होंने अनस रदियल्लाहु अन्हु ने रिजेक्ट कर दिया। वो उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास गए, उनको कंप्लेन किया, उमर रदियल्लाहु अन्हु ने अदल की बात की, उन्होंने जाकर अनस रदियल्लाहु अन्हु को बोला, वो नहीं माने, उन्होंने उनको स्टिक से स्ट्राइक किया और कुरान की वर्स पढ़े। अब कुरान की ये जो वर्स पढ़ने के बाद इंस्टेंटली अनस रदियल्लाहु अन्हु ने सबमिट किया। और आप देखें फिर ये है ब्यूटी इस्लाम की कि एक स्लेव जो है उसकी सुनी जा रही है, द लीडर अमीरुल मोमिनून जो है वो स्लेव की सुन रहे हैं, वो किसी और की बात नहीं सुन रहे हैं। क्यों?
یہ ہے دین اسلام کا عدل. یہاں پر کوئی چھوٹا بڑا نہیں، جو صحیح ہے، حق ہے، اس کی بات سنی جائے گی، اور جو صحیح ہے اس کو فالو کیا جائے گا. انس رضی اللہ عنہ نے قرآنک ورس کو ریجیکٹ نہیں کیا، سبحان اللہ، وہیں پر ہی سنا، وہیں پر ہی ایکسیپٹ کر لیا، اور الحمدللہ معاملہ جو ہے اس طریقے سے سیٹل ہوا. اور کہیں کسی بھی ہسٹری میں آپ کو اس طریقے کا نمونہ نہیں ملے گا. دس از دا بیوٹی آف اوور ریلیجن، الحمدللہ، دس از اوور اسلام. Umar's apology to Adi bin Hatim radiallahu anhu. One day, Adi bin Hatim radiallahu anhu and a number of delegates from his tribe visited Umar bin al-Khattab radiallahu anhu. Umar radiallahu anhu began to hand out shares of wealth to various men among the delegates. He gave one particular man 2,000 dirhams, but he turned away from Adi radiallahu anhu, perhaps thinking that he had not been seen. Adi radiallahu anhu stood directly in front of Umar radiallahu anhu, but again Umar radiallahu anhu turned away from him and continued to distribute wealth among the various delegates of the Ta'i tribe, that is Adi's tribe. Then Adi radiallahu anhu drew nearer until he was standing face to face with Umar radiallahu anhu. Much to Adi's chagrin, Umar radiallahu anhu turned away from him for a third time. Adi radiallahu anhu then said, "O leader of the believers, do you know me?" Perhaps it was the expression on Adi's face, or perhaps it was the manner in which he asked his question. Whatever the case, Umar radiallahu anhu was greatly amused, laughing until he fell on his back, realizing that Adi's feelings had been hurt when he turned away from him 3 times. Umar radiallahu anhu said on a more serious note, "Yes, by Allah, I do indeed know you. You believed when others disbelieved. You came forth with your Islam when others turned their backs on the Prophet ﷺ, and you were faithful when others acted treacherously. And verily, the first zakat, wealth, that whitened the face of Messenger of Allah ﷺ and the faces of the companions radiallahu anhum, that made them happy, was the zakat that arrived from the people of Tai, that is from Adi's tribe. And you were the one who brought the zakat wealth to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam." Umar radiallahu anhu then apologized for his previous behavior, after which he said, "Verily, I gave shares of wealth to people who have been afflicted with poverty. I have given shares to the leaders of various sub-tribes leaders who represent the rights of the people they left behind. And so, that is why I focused on giving wealth to them rather than paying attention to you." According to one particular narration, Adi radiallahu anhu then said, "If that is the case, then I do not mind." چھوٹی چھوٹی انسیڈنٹس بٹ کتنی بڑی بڑی ماڈلز ہیں اس کے پیچھے. ایک بار عادی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو ہے اور کچھ ڈیلیگیٹس جو تھے ان کی ٹرائب سے، وہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو وزٹ کرنے کے لیے آئے. عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ ان کا جو شیئر آف ویلتھ تھا دوسرے لوگوں کو، جو ویریس مین تھے ڈیلیگیٹس میں، ان کو دے رہے تھے. انہوں نے ایک پرٹیکولر آدمی کو 2,000 درہم دیا، اور پھر وہ جو عدی رضی اللہ عنہ تھے ان سے ٹرن ہو کے دوسری جگہ پہ بانٹنے لگے. اور ایسا انہوں نے ظاہر کیا کہ انہوں نے عدی رضی اللہ عنہ کو دیکھا نہیں. پھر عدی رضی اللہ عنہ ان کے فیس کے سامنے واپس آ گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے پھر ویسے ہی کیا، وہ دوسری طرف ٹرن کر گئے اور اپنا جو وہ کام کر رہے تھے ویلتھ ڈسٹریبیوٹ کرنے کا ڈیلیگیٹس کو، جو تائی ٹرائب کے تھے، ان کو کنٹینیو وہ کر رہے تھے. پھر دوبارہ سے عدی رضی اللہ عنہ ان کے قریب گئے اور ان کے سامنے فیس ٹو فیس کھڑے ہو گئے، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ ٹرن کر گئے تھرڈ ٹائم. اب عدی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، "او لیڈر آف دا بلیورز، ڈو یو نو می"، انہوں نے ان سے کہا، امیر المومنین، کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ پرہیپس ان کا جو ایکسپریشن تھا وہ ایسا تھا کہ یعنی وہ تھوڑے سرپرائز تھے، شاک تھے، اور وہ پوچھ رہے ان سے ڈائریکٹلی، جو بھی ان کا ایکسپریشن تھا. عمر رضی اللہ عنہ ہنسنے لگے، بہت ہنسنے لگے، اور اتنا زیادہ ہنسنے لگے اور اپنے بیک پہ گر کے پھر ہی واز لافنگ. اور پھر انہیں ریئلائز ہوا کہ شاید عدی رضی اللہ عنہ کی فیلنگز ہرٹ ہوئی ہیں. تو پھر وہ ان کے پاس سیریس ہو کے ان سے بات کرنے لگے. پھر وہ کہتے ہیں، "واللہ میں آپ کو جانتا ہوں، تم نے تب یقین کیا تھا دین اسلام پر جب دوسروں نے جھٹلا دیا تھا، اور جب لوگوں نے پیٹھ پھیر کر چلے گئے تھے تب آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا تھا. آپ بہت فیتھفل تھے جب دوسروں نے دغا بازی کی تھی، اور بلکہ آپ کے لوگ جو تائی ٹرائب تھا، جو عدی رضی اللہ عنہ کا ٹرائب تھا، ان کی زکوٰۃ ملنے پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیس جو ہے وہ وائٹ ہو گیا تھا خوشی سے، بہت ان کو یعنی ریلیف ملا تھا، اور وہ زکوٰۃ عادی ٹرائب کے پاس سے آئی تھی.
اور تم تھے وہ بندے وہ شخص جنہوں نے یہ زکوٰۃ کا ویلتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے. پھر انہوں نے ان سے معافی مانگی, اپولوجائز کیا پریویس بیہیویئر کے, اور کیونکہ انہوں نے 3 ٹائم ان کو اگنور کیا, اور پھر کہا کہ میں جو ہے لوگوں کے شیئر دے رہا ہوں ان کا ویلتھ کا جو کہ غریبی سے افلکٹڈ ہے, اور میں نے لیڈرز کو, سب ٹرائبس کو, سب کو ان کا اپنا حق جو ہے وہ دیا, اور میں نے اپنا فوکس جو ہے وہ ان کو دینے میں ڈالا تھا اور آپ کے اوپر اٹینشن نہیں پے کیا تھا, اور اسی لیے یعنی ہی جسٹیفائڈ اینڈ ہی اپولوجائزڈ. 2 چیزیں ہیں جو یہاں پر ہم لوگوں کو ایک مورل آف دا اسٹوری جسے ہم کہتے ہیں. جیسے ابھی ایسا ہوتا ہے نا کئی بار, جیسے ہم نے کسی کے اوپر احسان کیا ہو کبھی, ٹھیک ہے, 2-3 نقطے ہیں جس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے یہ اسٹوری کو لے کر. ایک یہ کہ جیسے فار ایگزامپل ابھی وہ عادی رضی اللہ عنہ نے جو بھی کیا, معاملات کیے, وہ اللہ کی خاطر کیے تھے, اور وہ الحمدللہ اچھی طرح سے ایکنالج بھی ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر. ابھی ہی از ایکسپیکٹنگ سم ویئر ڈاؤن دا لائن, ان کو کہیں نہ کہیں تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ہی شوڈ ریمبر اینڈ ایکنالج ہم, جو کہ ہم لوگ بھی کرتے ہیں. ہم نے اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی, کوئی احسان جتایا, تو ہمیں نہ کہیں انسانی فطرہ ہے, ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہمیں ایکنالج کرے. وہ ہمیں, جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا, نیکی کر دریا میں ڈال, رائٹ ہینڈ سے دو تو لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ چلے, ویسا ایٹیٹیوڈ ایکچوئل ریئلسٹک اس میں نہیں ہوتا. کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں ہوتا ہے کہ دیکھنا تو چاہیے تھا, دور سے ایکنالج تو کرنا چاہیے تھا, مسکرانا تو چاہیے تھا, ہم سوچتے ہیں. اسی طریقے سے دیکھیں آپ, علی رضی اللہ عنہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ شوڈ ہیو انسٹنٹلی سین اینڈ ریکگنائزڈ ہم, کچھ تو ایکنالج کرتے ہیں. اب عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا وہ کام کر رہے ہیں, ہی از ناٹ ایکنالجنگ. 1 بار 2 بار 3 بار انہوں نے کوشش کی, پھر جب وہ سامنے آ گئے تو عمر رضی اللہ عنہ ہنس پڑے, اور وہ ہنس رہے ہیں. ہی از لائک, آئی لائک ہز سینس آف ہیومر بائی دا وے. سبحان اللہ, کتنے نارمل لوگ ہیں یہ لوگ. ایسے نہیں ہے کہ ایک ہی ایموشن لے کے چلتے ہیں, سیریس ہوتے ہیں, نہیں, ہنستے ہیں, غصہ ہوتے ہیں, دیکھیں ڈسکس کرتے ہیں, دے لاف, دے اسمائل, دے کریک اے جوک, الحمدللہ اپنے حدود میں رہ کر. سو he started laughing, اتنا ہنسے کہ اپنے بیک پہ he lied down, turned away and he fell on his back and is laughing. پھر بعد میں انہوں نے دیکھا کہ شاید عادی رضی اللہ عنہ is getting little upset, تو وہ سیریس ہو گئے. پھر انہوں نے پورا قصہ بتایا. ایسا نہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بھول گئے تھے یا ایکنالج نہیں کیا تھا یا وہ ان کی انسلٹ کر رہے ہیں, ایسا نہیں تھا. Yet what he did, he explained him, سب یاد کیا انہوں نے, ساری ان کی جو پازیٹیو پوائنٹس سب بتایا. کہتے مجھے یاد ہے کہ آپ وہ شخص ہو جنہوں نے بلیو کیا تھا جب کوئی نہیں بلیو کر رہا تھا, آپ نے سپورٹ کیا تھا جب کوئی نہیں سپورٹ کر رہا تھا, آپ وہ ویلتھ لے کر آئے تھے, آپ زکوٰۃ لے کر تھے, ایوری تھنگ ایکنالجڈ, 1 2 3 4 پوائنٹس ہی ایکنالجڈ. اور پھر اس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ شاید ہی مسٹک, عادی رضی اللہ عنہ مسٹک ہز بیہیویئر, تو ان سے اپولوجائز کیا, تو معاملات ادھر ہی دنیا میں ہی سیٹل ہو گیا, کسی کا دل نہیں دکھا ان کی بات سے یا ان کے ایکشن سے. اس کے بعد جسٹیفائی بھی انہوں نے کیا لاسٹ میں, کہ کیا جسٹیفائی کیا, کہ میں جو ہے بزی تھا کیا کرنے میں, وہ ویلتھ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے امنگ دا پیپل ہو آر, جن کے اوپر غربت آئی تھی, وہ ایک امپورٹنٹ کام کے اندر تھے, تو انہوں نے ان کو زیادہ امپورٹنس پے نہیں کی. سو فار اس واٹ وی شوڈ ڈو ان آور ریئل لائف, acknowledgement, justification, yes we should do that. جہاں پر جسٹیفیکیشن ریکوائرڈ ہے اسے جسٹیفائی کریں. آپ کے ایکشنز اگر کسی کو ہرٹ کرتے ہیں اور وہ بندے نے ایکسپریس کر دیا تو جسٹیفائی, اینڈ ویر ایور پاسبل اپولوجائز. ایک نا بہت خوبصورت ورڈنگز ہے جو کہ ایک دعا کی شکل میں بھی ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. ایک سیکنڈ پلیز. اچھا, تو ہم لوگ جو ہے یہ اتنا خوبصورت سی ایک دعا ہے کہ او اللہ, if I hurt others give me the strength to apologize, and if people hurt me give me the strength to forgive. آمین یا رب. یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہم لوگ کو اتنی اسٹرینتھ دو کہ اگر میں کسی کا دل دکھاؤں تو اتنا میرا جگرا ہو کہ میں اس کے لیے معافی مانگوں, اور اگر کوئی مجھے ہرٹ کرے تو اتنا مجھ میں جگرا دو کہ میں جو ہے اس بندے کو معاف کر دوں. تو اس طریقے کا اپروچ ہونا چاہیے ہم کو, اس طریقے کا اپروچ ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم معافی مانگنے میں بھی وہ نہیں کریں اور معاف کرنے میں بھی کٹوتی نہ کریں, اس میں بخل نہ کریں. We have to remember this always. And whenever we are taking up such stories, اس کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ یہ لوگ کتنے نارمل ہیومن بینگ تھے
ان کے معاملات بھی اسی طریقے سے تھے جس طریقے سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں. ڈفرینٹ اسٹوریز ہماری لائف میں ہوتی ہوگی لیکن جو سیم مورلز وی ہیو ٹو سی ناتی. دس از واٹ وی ہیو ٹو لرن فرام دس اسٹوریز. ٹھیک ہے نا. اوکے. Abdullah bin Huzafa radiallahu anhu and the Roman Empire, Roman Emperor. This way. Okay. During the period of Umar's Caliphate, the noble companion Abdullah bin Huzafa as-Sahmi radiallahu anhu was captured and taken in as a prisoner by the Roman army. His captors took him to their emperor, who said to him, "Convert to Christianity, and I will make you a partner over my dominion." And furthermore, I will give you my daughter's hand in marriage. Abdullah radiallahu anhu replied, "Were you to give me all that you own, in addition to all that Arabs own, asking in return that I turn away from the religion of Muhammad sallallahu alaihi wasallam for even the blinking of an eye, I still would not do so." ایک بار ایسا ہوا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کہ ایک نوبل کمپینین صحابہ عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ تھے. ان کو ایز اے بندی ایز اے پرزنر بنا دیا گیا رومن آرمی کے اندر. تو ان کو جب ایمپرر کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے سیدھا ان کو پرپوزل دیا کہ آپ جو ہے کنورٹ ہو جاؤ عیسائیت پر اور میں آپ کو پارٹنر بناؤں گا اپنی ملکیت میں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ بھی دوں گا شادی کے لیے. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اپنی ملکیت اس کے ساتھ عرب کی ملکیت ایڈ کر لو, پھر بھی میں نہیں بدلوں گا جو ریلیجن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یعنی میں پھر بھی اسلام سے نہیں پھیروں گا, ایک بلنکنگ آف آئی کے لیے بھی نہیں پھیروں گا. تو پھر وہ ایمپرر کہتے ہیں کہ then I will kill you. That is up to you. Abdullah radhiyallahu anhu replied. The emperor gave the order and Abdullah radhiyallahu anhu was placed on a cross. The emperor gave another command and a number of archers fired a volley of arrows, all of which barely missed Abdullah's hands and legs. They missed intentionally, of course, for their job was to terrify him rather than to hurt him actually. As the arrows were being fired at Abdullah radhiyallahu anhu, the emperor kept telling him that he only had to embrace Christianity in order to save himself. اب ایسا ہوا اب یہ ہوا کہ جب ایمپرر نے ان کا جب عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جواب انہوں نے سنا کہ ایک بلنک آف آئی کے لیے بھی وہ نہیں چینج کریں گے اپنا ریلیجن, پلک جھپکنے کے لیے بھی کتنا فریکشن آف سیکنڈ ہے اتنے وقفے کے لیے بھی وہ نہیں پلٹیں گے, تو پھر ایمپرر نے حکم دیا کہ میں پھر آپ کو قتل کر دوں گا. تو انہوں نے کہا یہ آپ کی مرضی ہے. اب ایمپرر نے کیا کیا, آرڈرز دے دیا. عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک کراس پہ لے کر ان کو کھڑا کر کے اس کے بعد ایمپرر نے آرڈر دیا کہ جو تیر انداز تھے ان لوگوں کو کہا کہ مارو سارے تیر ان کے اوپر. اب وہ جو ہے ان لوگوں نے تیر پھینکے ان کے پیچھے ان کے اوپر اور وہ مس ہوئے انٹینشنلی, کیونکہ ان کو آرڈرز تھے, تیر انداز والوں کو آرڈرز تھے کہ آپ لوگ ان کو ڈراؤ, ان کو خوفزدہ کرو. جیسے ان پہ تیر پھینکے جا رہے تھے نا, فائر تیر پھینکے جا رہے تھے, ایمپرر جو ہے نا ہی کیپ ٹیلنگ, وہ بولتے رہا ان کو کہ آپ جو ہے عیسائیت قبول کریں, اپنی جان کو بچانے کے لیے عیسائیت قبول کریں. Nevertheless, Abdullah radhiyallahu anhu remained steadfast, refusing to succumb to the emperor's threats. Even though in such situation one is allowed to utter words of disbelief as long as one's heart is at peace with Iman, Abdullah bin Hudhafa radhiyallahu anhu's faith was exceptionally strong, and so he refused to take the easy albeit permissible way out of his predicament. ابھی وہ بولتا رہا اور ان کو ڈراتا رہا, دھمکاتا رہا, اور یہ جو فائر تیر تھے وہ آ رہے تھے, جاری تھے. ایمپرر ان کو کہہ رہا ہے کہ پلٹ دو اپنا دین, اور وہ جو ہے استقامت کے ساتھ ریلیکس کر رہے تھے. حالانکہ ایسی سچویشن میں کفر کے الفاظ بولنا اپنا الاؤڈ ہے. اٹ از ناٹ دیٹ کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو. اگر ایسی سچویشن آتی ہے تو اس میں گنجائش ہے. اگر آپ کے دل میں ایمان اسٹرانگ ہے, لیکن اپنی جان کو بچانے کے لیے اگر آپ کفر والے کلمات بولتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے. لیکن عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی
وہ والے آپشن کا بھی استعمال نہیں کیا, وہ اپنے کلمات, تھاٹس, ایکشن, ورڈز پہ ٹکے رہے. The emperor decided to resort to a crueler tactic. He ordered that Abdullah radiallahu anhu be taken down from the cross, after which he ordered his men to prepare a huge pot. Once the pot was heated to a very high temperature, a Muslim prisoner was led to the pot and was thrown inside, melting away very quickly until all that remained of him were his bones that floated on the surface of the boiling water. All of this was done as a show for Abdullah radiallahu anhu, so that he would know that he had only two choices: either die a painful death or become a Christian. Abdullah radiallahu anhu chose the former option. Consequently, he radiallahu anhu was about to be thrown into the pot when suddenly he began to cry. The emperor thought that he had finally broken Abdullah radiallahu anhu, and so he ordered his men to bring Abdullah radiallahu anhu back to him. जब ये एम्परर ने देखा कि इनकी हिम्मत नहीं टूट रही है, तो उसने फिर हुक्म दिया कि इनको वो क्रॉस पे से उतारा जाए. अब वो और एक कोई शैतानी इवल हरकत के बारे में सोच रहा है. उसने एक पॉट को जो है वो गर्म करवाया, एकदम हीटिंग बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचाया. फिर एक मुस्लिम दूसरे किसी मुस्लिम प्रिजनर को बुलाकर उसको वो गर्म पॉट में डलवा दिया. इमीडिएटली वो मेल्ट हुआ और सिर्फ ऊपर बोन्स फ्लोट होने लगी. ये सब ये कर रहा था ताकि अब्दुल्ला रदिल्लाहु अन्हु का जो है वो हिम्मत जो है पस्त हो जाए और वो अपने घुटने टेक दें. और उसने फिर उनको ऑप्शन दिया, कहते हैं या तो आप क्रिश्चियन बनो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ. तो अब्दुल्ला रदिल्लाहु अन्हु मरने के लिए तैयार हो गए. और जैसी पॉट उनके सामने लाया गया और उनको डालने की बारी आ रही थी, तो वो रोने लगे, अब्दुल्ला रदिल्लाहु अन्हु रोने लगे. अब वो जो एम्परर था उसे ऐसा लगा कि फाइनली उसने अब्दुल्ला रदिल्लाहु अन्हु को ब्रेक कर दिया. अजान हो रही है, we'll just need to take a pause for a bit. ओके फिर उसके बाद वो जो है अब्दुल्ला रदिल्लाहु अन्हु रोने लगे और फिर एम्परर को लगा कि उन्होंने अब्दुल्ला रदिल्लाहु अन्हु की जो हिम्मत है उसको पस्त कर दी है. When the emperor rejoiced at the thought that he had finally won his battle of wits with his prisoner, Abdullah radiallahu anhu said, I cried merely because I have only a single soul that at the present moment can be thrown into this pot for the sake of Allah Azza wa Jal. I wish that for each hair I have on my body, I had a soul that could be given this punishment, that is the punishment of being boiled alive for the sake of Allah Azza wa Jal. According to some accounts, the emperor then imprisoned Abdullah radiallahu anhu, deprived him of both food and drink for a number of days. Then, when Abdullah radiallahu anhu was on the verge of dying of dehydration, the emperor sent him a feast, one which consisted of generous portion of pork and a sufficient quantity of alcohol, both of which are of course prohibited in Islam. Abdullah radiallahu anhu ate not even a morsel of the pork and he drank not even a sip of the alcohol. जब वो रोने लगे तो एम्परर को लगा कि मैं जीत गया और अब्दुल्ला रदिल्लाहु अन्हु हार गए. तो उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने उनको बताया, अब्दुल्ला रदिल्लाहु अन्हु ने उनको बताया कि मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ एक ही जान है. आई विश कि मेरे पास इतनी जान होती कि जितने मेरे जिस्म पे बाल हैं, अगर उतनी जान होती तो मैं वो सारी की सारी जो है अल्लाह की खातिर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही है, इसलिए मैं रो रहा हूँ. तो फिर से वो एम्परर जो है उसने सोचा कि अरे ये तो और भी आसान हो गया इसके लिए. तो उन्होंने फिर तीसरा प्लान इम्प्लीमेंट किया. उन्होंने उनको इम्प्रिजन कर दिया और फिर उनको खाना और पानी दोनों ही बंद कर दिया. अब जब अब्दुल्ला रदिल्लाहु अन्हु डिहाइड्रेशन की वजह से बिल्कुल मरने वाली हालत हो गई, तो फिर वो एम्परर ने उनके लिए एक फीस्ट भेजा, खाने का इंतज़ाम किया और वो भेजा. उसके अंदर था पोर्क और अल्कोहल की क्वांटिटी, जो दोनों ही इस्लाम में ममनू है, फॉरबिडन है. और अब्दुल्ला रदिल्लाहु अन्हु ने ना तो एक निवाला लिया पोर्क का, ना तो एक वो अल्कोहल का एक सिप लिया. The emperor then sent for him, and when Abdullah radiallahu anhu stood before him, the emperor asked, what prevented you from eating? Abdullah radiallahu anhu replied, in fact, the food and the drink were lawful for me. He radiallahu anhu said this because in emergencies or dire situations, when a man cannot find lawful food, he may eat enough unlawful food to keep him alive. After making it clear that the food was lawful for him, Abdullah radiallahu anhu went on to explain why he did not eat it. I did not want to give you the opportunity to gloat over my grief. At least kiss my head, and I will then free you, said the emperor. And along with me, will you free all the Muslim prisoners that you have in your custody? Asked Abdullah. Yes, replied the emperor. Abdullah radiallahu anhu kissed the emperor's head, after which, in keeping with his promise, the emperor freed Abdullah radiallahu anhu as well as all the Muslim prisoners that his men had captured.
When Abdullah radiallahu anhu and the others returned safely to Medina, Umar radiallahu anhu said, "It is the duty of every Muslim to kiss the head of Abdullah bin Huzafa radiallahu anhu, and I will be the first to do so." Having said that, Umar radiallahu anhu stood up and kissed Abdullah radiallahu anhu on his head. Beautiful, mashallah. अब ऐसा हुआ कि उनको जो है खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया था और फिर उनके लिए फीस भेजा गया जहाँ पर पोर्क और अल्कोहल था, तो फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर एम्परर ने उनसे कहा कि क्या हुआ, व्हाट प्रिवेंटेड यू फ्रॉम ईटिंग इट। तो अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये जो खाना आपने भेजा था वो मेरी सिचुएशन में लॉफुल है, बिकॉज एक इसे कहते हैं नॉलेज। इफ यू हैव इल्म ना, देन यू नो एग्जैक्टली किस वक्त पर किस सिचुएशन पे क्या अलाउड है, क्या परमिसेबल हो जाता है। कहते हैं ये मरने वाली हालत में अनलॉफुल भी मेरे लिए लॉफुल हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमको नहीं चांस दूंगा कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को सीज करो और इंजॉय करो कि मैं भूखा था और तुमने मुझसे ज़बरदस्ती जैसे पोर्क और अल्कोहल एज एन ऑप्शन कोई बचा नहीं था तो तुमने मुझे खिलाया, तो मुझे तुमको वो इंजॉयमेंट से डिप्राइव करना था। तो फिर राजा, वो जो एम्परर था वो इतना, आप सोचें उसकी लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होगी। एनीवेज फिर उसने बोला, वो भी समझदार था, फिर उसने क्या किया, उसने कहा कि एटलीस्ट तुम मेरा फोरहेड किस करो तो मैं तुमको जो है ना छोड़ दूंगा, फ्री कर दूंगा। अब इस पर अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं अकेला नहीं, जितने भी आपकी कस्टडी में मुस्लिम प्रिजनर्स हैं आप उन सबको फ्री करने का प्रॉमिस करो तो मैं किस करूंगा। तो वो एम्परर ने वो राजी हो गया और फिर अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु ने एम्परर का फोरहेड किस किया और फिर उनके साथ साथ जितने मुसलमान बंदी थे उनको भी रिहा कर दिया गया। अब जब अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु सेफली रिटर्न हुए मदीना में दूसरे मुस्लिम प्रिजनर्स के साथ, और उमर रदियल्लाहु अन्हु ने फिर कहा कि हर मुसलमान की ये ड्यूटी है कि वो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा रदियल्लाहु अन्हु का फोरहेड किस करे, और मैं सबसे पहले ये काम करूंगा। और फिर उन्होंने वो खड़े हुए, उनको ऑनर किया, उनको फोरहेड को किस किया। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। यानी अगर हम अपने बच्चों के साथ ही आज डिस्कस करेंगे तो कितनी खुशी महसूस होगी कि आप देखें कितने लेसन्स हैं इसके अंदर। लेसन्स हैं कि इस्तिकामत और अपने रिलीजन पे खरे उतरना और राइट नॉलेज हाथ में रखना और किसी भी ताकत के आगे झुकना नहीं, किस तरीके से अपने आप को लेकर चलना, ना रिबेल करना। देखिए आप जहाँ पर वो एक जगह पे सख्त हो रहे थे कि नहीं मैं बिल्कुल नहीं झुकूंगा, मैं बिल्कुल नहीं राजी हूँ बेंड होने के लिए, और अगली जगह पे जब उसने राजा ने, एम्परर ने ऑफर डाली कि आप फोरहेड को मेरे किस करें, तो उन्होंने वहां पर कोई जिद बना नहीं दिखाया, वहां पर उनकी विजडम दिख रही है। उन्होंने सिर्फ अपनी नहीं, अपने दूसरे मुसलमान भाइयों की भी जानों को जो है वो छुड़वा दिया उसके चंगुल से। तो सुभान अल्लाह, इस तरीके की बैलेंस होनी चाहिए, इस तरीके का हिकमत होनी चाहिए। कितनी खूबसूरती, कितनी पावर, कितनी स्ट्रेंथ, कितनी पेशेंस, यानी हर ट्रेट आप देखें कितना ब्यूटीफुल है। और ये ऐसे ही नहीं आता, ये आता है जब आपको अल्लाह की तरफ से हिदायत हो, आपको तौफीक हो मिले और आपके पास इल्म हो, तभी ही जाकर ये सब चीज़ें होती हैं, वरना नहीं। सुभान अल्लाह, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनकरेजिंग स्टोरी। आई लव्ड इट एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी पसंद आई होगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर ऑलरेडी 3 मिनट्स अप ओवर टाइम। सो यहाँ पर अभी हम एंड करते हैं। कोई अगर क्वेश्चन है, कोई डिस्कशन है तो इट्स एन ओपन फोरम। अगर क्वेश्चन नहीं है तो विल क्लोज इट। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।